आज का जो एजेंडा है स्माइल के ऊपर, तो काइंडली थोड़ा इस पे आप हमारी रहनुमाई करें कि स्माइल से रिलेटेड किस तरीके से स्माइल लेनी चाहिए और किस तरीके से किस वक्त है। तो ये अच्छी बात है, हमें थोड़ा इस पे भी जरा काउंसलिंग करें। इसी पे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सुन रहे हैं इंशाल्लाह, बैठे हैं आपकी, बिल्कुल सुनेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा मिस मरियम, वी हैव ऑलरेडी लाइव जा चुके हैं हम लोग, ठीक है, यूट्यूब पे मैंने लाइव कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सेशन अब लाइव भी किया सुना जा सकता है। अब मैं इसका लिंक बस आप थोड़ी देर में शेयर करता हूँ आपसे व्हाट्सएप पे, ठीक है। अच्छा फिर तो हम शुरू करें अपना प्रोग्राम। यस, मैं प्लीज किक ऑफ कर। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैरन फॉर टू एवरीवन जो इस वक्त टाइम निकाल के, ऑफ कोर्स मंडे का दिन है और लोग नौकरियों पे भी होंगे और काम पे होंगे, फिर भी आप लोगों ने ज्वाइन किया। आज का टॉपिक इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड फॉर एवरीवन। जो हमारे हालात हैं, जिन चीज़ों से हम गुजर रहे हैं हमारी ज़िंदगियों में, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। जब भी मुझसे कोई बात करते हैं तो वो मुझसे यही पूछते हैं कि क्या तरीका है कि हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकें। तो आज इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे एंड द टॉपिक इज पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ स्माइल, जो कि बहुत ही मतलब हम इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने मुस्कुराना छोड़ दिया है बिकॉज हमने अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर ली हैं गैजेट्स की। और जब हम गैजेट्स की दीवारें खड़े कर लेते हैं तो हम मुस्कुराते भी उसी को देख के हैं, बातें भी उसी से करते हैं, तो कोई कम्युनिकेशन तो रहती ही नहीं है। जब कम्युनिकेशन आपस में आपकी फिजिकली नहीं होती तो फिर भीड़ में भी इंसान अकेला खड़ा होता है, अकेला बैठा होता है। अक्सर मुझसे लोग ये कहते हैं कि इतने लोगों के बीच में भी आई फील लोनली। तो वो जो लोनलीनेस है वो इसलिए कि हमने अपने आपस में हमने ये दीवारें खड़ी कर ली जिसमें हम अपने आप को हमने अकेला कर लिया है। तो स्टार्टिंग विद द सेशन, बासित आप इसको स्लाइड को आगे बढ़ाएंगे? जी बिल्कुल, मैजिक बिगन हो चुका है। मैजिक हो गया है। हमने दुआ भी कर ली सक्सेस के लिए और हमने आगे भी थोड़ा सा कैन वी गो फर्दर? ओके जी, ओके इस पे आ जाइए, नेक्स्ट वाले पे जी। दिस इज अ स्मॉल लिटिल इंट्रो अबाउट माई सेल्फ। आई एम श्योर आप लोगों ने वो सुन लिया, पढ़ लिया होगा कि हु एम आई। So छोटा सा ये कि I'm a founder and CEO of 𝐻𝑨 International. It's an exporting company, and I have my own brand which is called 𝑔ْلow𝑚𝐫𝐢𝐚𝐫 Skincare. It's an organic, halal certified skincare product, which is my own thing. I started it last year, and the formulas are mine. I make it myself. इसके अलावा I'm a certified addiction, specifically pornography coach and intimacy coach from Aware Academy, Australia. And I'm a certified well-being, relationship and smile coach. And I'm a celebrity image and a skin consultant. I'm a motivational and inspirational speaker, mentor, and I skill development और teacher wellness पे training करती हूँ। लीन इन पाकिस्तान में एजुकेशन की लीडर भी रही हूँ। आई एम होस्टिंग माई ओन रेडियो शो दीज डेज, इट्स कॉल्ड आओ बात करें, ऑन अपना कराची FM 107 में। आई एम अ मेंबर ऑफ द FPCCI and WCCI. I've been a fashion designer, I'm a social worker, a humanitarian, and I do a lot of other things, which बातों के साथ हम इंशाल्लाह इसको भी बताएंगे। एक छोटा सा इंट्रो था ये मेरा, so that people who don't know me कि मैं क्या करती हूँ और क्या करती आई हूँ। So we can go to the next slide. अच्छा, this is a certificate. So people ask me कि आपके पास वो कागज का एक टुकड़ा है कि नहीं, जिससे पता चले कि आप सर्टिफाइड हैं। तो जी है, ये this is very close to my heart because this is which I did or I'm representing Aware Academy here as a certified teacher, trainer and coach. So let's change the slide.
अच्छा जी, हम स्माइल की बात कर रहे थे, तो why did I choose this topic, which is very important for me? क्या स्माइल क्या है, why smile? तो स्माइल से जो है ना बहुत सारी चीजें होती हैं. If you can see the screen, smile is actually the cooling system of our heart, and it is the sparkling system of our eyes. और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि it's a lightning system of our face. It glows. जब आप smile देते हैं तो आपका face glow करता है, and it is a relaxing system of your mind. तो मैं ये कहती हूँ कि जब आप ये सारे जो systems हैं, जब आप इसको recharge करते हैं, reboot करते हैं, सुबह के वक्त जब आप उठ के smile करते हैं, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है if you work on that. So this is a very important thing. और मैं लोगों से कहती हूँ, अपने क्लाइंट से, अपने पार्टिसिपेंट से, कि इसको जरूर प्रैक्टिस करें फॉर एवरीडे. एवरीडे सुबह उठ के इसको जरूर अपने जिंदगी में एक रेगुलर प्रैक्टिस कर लें, इसको प्रैक्टिस बना लें. So we can go to the next slide now. अच्छा जी, there is a magic in your smile. I always say that. अब now why do I say there's a magic in your smile? अब आप देखिए, जब आप किसी को मुस्कुरा के देखते हैं, और मुस्कुराए भी सही लोगों पे, यानी कि खावातीन को देख के मुस्कुराएं, को देख के मुस्कुराएं, तो जब आप मुस्कुराते हैं तो आप definitely, it's a contagious thing. You do get back the smile, don't you? I can see the smile right now also आपके faces पे. This is an amazing thing. It turns out that when I smile, the world smiles back at me, and this is something which a lot of people don't do, and it is something so simple and yet so powerful. So people seldom notice old clothes if you wear a beautiful smile on your face, a big smile on your face. It's very important. Scientists and spiritual teachers have actually now, हमें तो बता दिया गया था कि this is 14 साल पहले कि this is a charity, smile is a charity, it's something which हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी, उनको बगैर किसी मुस्कुराहट के किसी ने देखा नहीं था. लेकिन आजकल के दौर में हम डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, और हमें हर चीज में हम कहते हैं कि जिसकी साइंटिफिक क्या से है. तो now the researchers have come to this point that the simple act of smile can transform you actually and the world around you. Current research has shown us that the smile is contagious, so you should smile more. So next slide, slide change करें. अच्छा जी, sometimes ये बड़ा interesting है, और इसको आप गौर से सुने और समझें कि क्या मतलब है इसका. Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy. ये बहुत से लोग नहीं समझते, और इसी चक्कर में हम जो है ना बिल्कुल हम मुस्कुराना हमने छोड़ दिया है. हमें लगता है कि हमें मुस्कुराना आता ही नहीं है, जो कि बड़ी तकलीफदेह बात है कि आपको मुस्कुराना क्यों छोड़ दिया आप लोग को. ये तो हमारे लिए एक it's something which is very important, and we should have it in our life. So sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes smile can. So it depends what are those things which are actually making you smile. As it narrated by the 𝐻𝑨, उन्होंने कहा कि I have not seen anyone who smiled more than the messenger of Allah, peace be upon him. So imagine, ये हमारे लिए तो बड़ी अजीम चीज है, हर हम फॉलो भी करते हैं, तो हम क्यों नहीं मुस्कुरा सकते. And your smile for your brother is a charity. So this is also हमारे प्रॉफिट कहते थे. So this is a charity which we have stopped doing. Charity का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि किसी को पैसे दे देना या कपड़े दे देना या कुछ. A small act of kindness, a small act of kindness is a smile as well. So we should more often smile than frown, have a frown on our face, or being upset or being angry. वैसे भी गुस्सा तो वैसे ही हराम है. So we'll go on the next slide now. Acha ji, our Prophet, peace be upon him, had smile on his face always. Did you know that the Prophet was big on smiling? But many practicing Muslims seem to have their faces upside down. What is that supposed to be? That means we have a frown और गुस्सा ही होता है. हमारे माथे पे बल होता है और हमारे चेहरे पे गुस्सा होता है हर वक्त. हमारे चेहरे पे कभी भी स्माइल नहीं होता. इनफैक्ट कुछ लोगों के साथ मसला ये भी है, जब हम मुस्कुराते हैं देख के या सलाम करते हैं, तो वो गुस्से में देख के पूछते हैं कि डू आई नो यू,
बजाय स्माइल करने के या वालेकुम सलाम कहने के, मुझसे मैं पूछते हैं कि डू आई नो यू। तो ये भी एक मसला है हमारे साथ, which we need to change. So being polite and kind are all part of the manners of Prophet sallallahu alaihi wasallam, which we must exercise in our daily lives. If we want to approach others with Islam, we have to make ourselves approachable by smiling is the key to this. So हम तो ये भी कहते हैं peace begins with a smile. वो जो बॉर्डर पे लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं उससे नहीं होता, टेबल पे जब बातें कर रहे होते हैं ना आप एक दूसरे से स्माइल वो करते हैं तभी तो peace start होता है. So this is a very important message. Can we change the slide? Okay. Release the endorphins. Now this is very interesting. अब जब मैंने आपसे scientifically बात की तो अब scientifically भी मैं आपको बताती हूँ क्या how does a smile affect us. When you smile, your brain releases tiny molecules called neuropeptides. ठीक है, वो हेल्प करते हैं आपके स्ट्रेस को फाइट करने के लिए. Then other neurotransmitters like dopamine and serotonin and endorphins can also come into play too. जब आप ये रिलीज करते हैं, जब आप स्माइल करते हैं, तो endorphins act as a mild pain reliever. वो तो एक mild pain reliever होता है, whereas the serotonin is an antidepressant. All this can happen just by smiling. So imagine so keep smiling to be stress-free and happy. So scientifically now, you know, when you smile, these chemicals release in your brain and they actually relieve you from stress and they relieve you from depression as well. This is how important it is. It actually signal. और मैं आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको स्माइल नहीं भी करने का दिल चाह रहा और आप एक स्माइल भी देते हैं तब भी ये सिग्नल करता है आपके ब्रेन के इन केमिकल्स को, and the same thing happens to you whether you smile on purpose or you just move your lips and it and say okay I'm smiling. The next slide. Smiling not only offers a mood boost, सिर्फ mood boost नहीं करता है, but helps our bodies to release cortisol and endorphins that provides numerous health benefits like reducing blood pressure, increasing endorphin, reduce pain, reduce stress, and strengthens our immune system. So imagine this. The scientists say, the scholars say, the researchers say कि बस एक मुस्कुराने से आपको ना ब्लड प्रेशर की गोली खाने की जरूरत है, ना आपको पेन किलर खाने की जरूरत है, ना एंटी डिप्रेसेंट लेने की जरूरत है. आपके इम्यून सिस्टम को भी नॉर्मलाइज कर रहा है, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मलाइज कर रहा है. आपको आप देखें जब पुराने वक्तों में एनेस्थीसिया नहीं होता था, पेन किलर नहीं होता था, तो लोग जो हैं वो गैस जो होते थे ना, गैस लगा के दांत निकालते थे. व्हाट वाज दैट गैस? हीलियम गैस लगा के आपके दांत निकाल देते थे और वो हंसते हंसते सारे काम हो जाते थे. इमेजिन हाउ पावरफुल इज द स्माइल एंड लाफिंग इज, जो कि पुराने वक्तों में पहले हम ज्यादा इस्तेमाल करते थे, अब हम कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते. तो इमेजिन जस्ट बाय स्माइलिंग how many good things are happening to your body, your mind, your brain, so many amazing things without इसके लिए ना आपको कपड़े बदलने की जरूरत है, ना अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है, ना आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, ना किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है. Just by smiling आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं. Just by sitting in your house, and I keep on saying practice is every day. जब आप सुबह उठते हैं just प्रैक्टिस करना चाहिए. यू नो यू कैन ब्रेन ट्रेन योरसेल्फ. तो जब आप ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग आई नीड टू स्माइल. अब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई किस चीज के लिए स्माइल करें. को उठेगा कहेगा ये क्या पागल है. मैंने कहा पागल कौन बोलेगा यार. आप शादीशुदा है तो आपके शौहर होंगे या आपकी बेगम होगी बराबर में, या आप बहन भाई हो तो बहन भाई होंगे, या मतलब कमरे में क्या होगा. आप अगर स्माइल नहीं कर सकते चले वॉशरूम में चले जाएं. जब आप ब्रश कर रहे होती तब आप शीशे को देख के मुस्कुराएं. few seconds smiling and it helps you the whole day. आपका सुबह से लेके रात तक आप ये प्रैक्टिस करके आप अप्लाई करके देखें. It is tried and tested. It will help you, and this is what makes me going. I do a lot of things, mashallah wala hawla wala quwwata illa billah, and I'm telling you, just by smile, I can do so many things, and it helps me from morning till night to complete all my tasks with a happy face, with a good mood, with a booster. So it really helps. That's why I'm telling you to do so. So we will go on the next slide.
The magic word is to straighten the slide. Okay, yes. Okay, why is smile powerful? हमने इतनी सारी तो बातें कर ली है कि why है, मैंने पहले भी कहा. इसमें मैंने छोटे-छोटे चीजें इसलिए लगाई हैं ताकि आपको समझ में आए why is smile powerful. It can reduce stress, हमने अभी बात की. Help heart ये हार्ट की स्पेलिंग में गड़बड़ हो, यानी हेल्प हार्ट हेल्थ, यानी कि आपके दिल को भी अच्छा रखता है. जो अक्सर लोगों को दिल की तकलीफें, बीमारियां हो जाती हैं, आपका ब्लड प्रेशर को लो रखता है, बूस्ट योर इम्यून सिस्टम एंड डिक्रीजिंग कोर्टिसोल इन योर बॉडी. कोर्टिसोल जो है वो डिक्रीज रहता है तो आपकी जिंदगी बेहतरीन रहती है. सो इट्स एज आई से ऑलवेज वेयर अ स्माइल बिकॉज योर स्माइल इज अ रीजन फॉर मेनी अदर्स टू स्माइल. तो आप सोचें, एक स्माइल is like a 𝑠𝑑𝑞𝑎. It's like video do. आप multiplies by 10, and I tell people कि don't let the chain break. Keep smiling, keep smiling. आपको पता है वो जो एक मूवी थी MBBS था, मुन्ना भाई MBBS था, उसमें वो क्या कहता था, वो जादू की झप्पी देता था. तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जादू की झप्पी ना दें, लेकिन आप जादू की स्माइल दे दें, मुस्कुरा दें, जादू की स्माइल दे दें. जब आप जादू की स्माइल देते हैं ना, तो आप सोचें आपके बॉडी में क्या क्या चीजें हो रही होती हैं और अगले के लिए कितना अच्छा हो रहा होता है. So it's important to understand that how powerful the smile is, how many people can benefit from just by you giving a smile. जैसे मैं कहती हूँ ना, कतरा कतरा समंदर होता है, एक शुरू करेगा तो वो चेन होता है. आप शुरू करें, आप ये कहें it's not easy. मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आपके लिए आसान होगा बिकॉज आपके पास जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है. तो ये कहना कि नहीं है, it's wrong. We all carry a burden of something on our back. Whether it is stress, depression, पढ़ाई का मसला, बच्चों के प्रॉब्लम, शादी के इश्यूज, या घरेलू प्रॉब्लम, in-laws के प्रॉब्लम. There are so many things. Everybody has something, some burden on their back. So if अगर हम किसी को एक मुस्कुराहट दे सकते हैं, उनकी चीजों को ठीक कर सकते हैं, तो why not? It's a deed to do. Smiling is contagious. It is also a sunnah. So why can't we start doing this sunnah by smiling at others? Sometimes life has a tendency to wipe away a smile, but remember, Allah Ta'ala has the tendency to keep that smile on your face and doesn't take anything. आप सोचें, frown करने के लिए आपके पूरे face के muscles use होते हैं, अगर आपको frown करना हो, गुस्सा. लेकिन जब आप smile करते हैं, वो सिर्फ आपका muscle आपके lips का होता है. Imagine, and that's the reason gives glow on your face. It gives that powerful impact and the contagious impact that whoever sees you. वो, और अगर आप दिल से मुस्कुरा रहे हैं किसी को देख, तो definitely it is contagious and it will speak the power out. So let's go to the next slide. Now, looking at the bigger picture, each time you smile at a person, their brain coaxes them to return the favor, right? You are creating a symbiotic relationship between that allows both of you to release good, feel good chemicals. यानी कि जो मैंने आपसे बोला कि जो chemicals brain को signal करते हैं, जब आप एक दूसरे को देखते हैं, तो वो दोनों के brain को signal देता है कि वो chemical feel good वाला, happy वाला, smile वाला chemical उसको आपके brain में. Somebody has joined back. Okay. Okay, in your brain, activate rewards centers make you both more attractive. Imagine this. Good feel जो chemical है वो activate करता है आपके reward की जो brain है वो activate करता है, reward करता है to the center of your brain and makes you attractive and increases of you to have a longer and a healthier life. Isn't that amazing? ना आपको कोई multivitamin लेने की जरूरत है. What the dose is, I say that take the multivitamin of smiles. That's what you need to do. The multivitamin of smiles can actually give you so much of so many things that you can't even imagine.
आई थिंक मिस मरियम जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। Let me- आवाज Can you hear me? आवाज हाँ, अभी आपकी आवाज बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई थी एक्चुअली। कैन यू प्लीज रिपीट प्रीवियसली आपने जो। आपको आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है आवाज, अभी आना शुरू हो गई है, अभी आना शुरू हो गई है मिस मरियम। ओके 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 ओके। हाँ, उसको रिपीट कर दीजिएगा बस, ये वाली स्लाइड दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है जी, सॉरी। देखिए जी, हम डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, कभी भी कहीं भी कोई गायब हो सकता है आवाज भी गायब हो सकती है, तो माजरत के साथ can't help this. This is all the fault of the digital world. So okay, now are we talking about looking at the bigger picture? Why is smile so powerful? So मैं ये बात कर रही थी कि each time when you smile at a person, the brain causes them to return a favor. यानी कि जब आप smile करते हैं, that's contagious. It will actually, you want to smile back unless or until you have अच्छा, कनेक्शन की वजह से ना मिस मरियम आपका जो आवाज है वो जनक वो हो रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रही है। not smiling. चलें, ग्रेट हो गया। ये बेसिकली मिस मरियम की हम आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन की वजह से डिस्टॉर्शन हो रही है। मैसेज तो मैंने कर दिया है, लेकिन अब एनीवेज दोबारा कॉल कर लेता हूँ भाई। अभी तक से कोई भी नहीं आया। Okay. I think we connection issue है या there is some kind of glitch or something. I'm so sorry about it. Can't help it. Okay. So मैं कॉल कर रहा था एक्चुअली मिस मरियम, हम आपको सुन ही नहीं पा रहे पिछले 5 मिनट से ना। आई थिंक नेट की वजह से ना नहीं आवाज आ रही सही, तो आई वाज जस्ट कॉलिंग यू टू। हाँ, नहीं सुन पाए आपने जो कहा, अनफॉर्चुनेटली नहीं सुन पाए। अच्छा, ओके, मैंने अपना फोन भी उस पे रखा हुआ था। आई वाज कॉल। कैन यू हियर मी राइट नाउ? हाँ, ये आप वाईफाई पे कनेक्टेड है राइट? यस यस। हाँ, तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से वो नहीं कनेक्ट कर रहा। अब सही है? एम आई ऑडिबल? जी जी, अभी ऑडिबल है जी, बिल्कुल। अच्छा, ओके, अच्छा ठीक है। I'll go through it quickly again. हम बात कर रहे थे कि why is smile powerful and what is the bigger picture of smile? How is it making our life better and giving us confidence, attractive, and how is it making our life healthier and longer? So जब हम एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं तो एक ब्रेन का कॉक्सस है, कॉक्सस them to signal देता है to return the favor. ठीक है? So you're creating a symbiotic relationship between you two by releasing a feel-good chemicals in your brains. Am I audible to everyone? जी जी, बिल्कुल। Okay, so it activates reward centers, make you both more attractive and increases the chances of you to live happier and longer, healthier life. Because जब आप smile देते हैं एक दूसरे को देख के, तो आपके वो जो फील गुड केमिकल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, आपको रिवॉर्डिंग सेंटर बन जाता है, आप you start feeling happy, attractive, confident, and of course जब आप मुस्कुराते हैं तो आप उम्र में भी कम लगने लगते हैं, आप उम्र चोर भी हो जाते हैं। So imagine कि आपकी मुस्कुराहटें क्या क्या बिखेर सकती हैं। तो the bigger picture is to just start practicing to smile at
each other rather than looking at the gadgets. Gadget को smile करने से वो आपको smile नहीं देता, वो आपके लिए कोई chemical नहीं release करता. So when you look at each other, then it actually gives a signal, and then it makes you feel good वाला जो chemical है वो आपको gadget से नहीं होगा. So let's go on the next slide, क्योंकि हमने ये 3-4 दफा इसी को repeat कर दिया है because we couldn't hear each other. अच्छा जी, जब मैं अभी ये छोटी सी चीजें हैं जो कि मैं आपसे शेयर करूंगी. There is fear when frowning. There is always a fear. जब आप frowning face बनाते हैं तो आपके दिमाग में negative thoughts होते हैं, ठीक है? But there is love when you're smiling. जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके दिल में, दिमाग में अच्छी बातें होती हैं. So it's frowning is not a good thing. Smiling is, so you feel better. So life is better when you're smiling. इसके अलावा ये भी है कि it's never easy to hide pain under a smile. It's not easy. I know we all are carrying some kind of burden on our back. It can be of anything. But वही वाली बात, जिंदगी इसी का नाम है. और जिंदगी खूबसूरत है because अल्लाह ताला says कि this is a life. एक छोटी सी जिंदगी है और वो भी टेस्ट के लिए, challenges के लिए. अगर हम ये सोचें या कोई आपसे ये कहता है कि उसकी जिंदगी में challenges नहीं है, hardship नहीं है या कोई दुख नहीं है, तो वो normal नहीं है. कभी छोटा मोटा stress होना is a normal thing. उसको अगर आप जब तक you don't make it big. So imagine कि अगर कोई तकलीफ में भी मुस्कुराता है तो it's actually अल्लाह ताला उससे और खुश हो रहे होते हैं कि देखो इस तकलीफ में भी. In fact, it's very difficult, you know, when you have have some kind of pain and you're still smiling. So you can only do that if you care about others more than yourself. So वो जो हमारे अंदर से तो जो empathy और compassionate वाला जो मादा है हमारे अंदर से खत्म हो गया है. We don't feel for anyone. We just हम एक वो रैट रेस में हैं, दौड़ रहे हैं और हम सिर्फ चाहते हैं कि हम एक मकाम पे पहुंच जाएं, हम एक किसी ऊंचे जगह पे पहुंच जाएं. तो हम उस रैट रेस में हम अपने जो loved ones हैं उनको भी छोड़ देते हैं. We forget that loved ones are there. They also need to be acknowledged, you know. तो छोटी-छोटी, मैं हमेशा कहती हूँ, छोटी-छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें अपने प्यारों के साथ. ये ना हो कि आप उस मकाम पे पहुंच जाएं तो आपके साथ जो लोग थे वो खड़े ही ना हो, क्योंकि आप उनको सब कुछ छोड़ चुके होंगे पीछे. तो ये बहुत जरूरी है कि you are very empathetic, you understand others. जब मैं कहती हूँ, जब when we are working in an environment, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लीडरशिप की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि आपके वजह से हर कोई मुस्कुरा रहा हो. So it's very important. If you are a founder or a CEO of a company, you're running a big empire, or you are in an office also, being a colleague of someone. अगर आप किसी की जिंदगी में एक मुस्कुराहट बिखेर दें और उसको एक छोटा सा नेकी कर दे, तो imagine वो आगे भी it multiplies. So कोशिश करें कि छोटी-छोटी kindness करें, छोटी-छोटी नेकियां करें by smiling, by asking how are you doing. बिकॉज हमने छोड़ दिया है लोगों से पूछना कि तुम कैसे हो, आप कैसे हैं. एक छोटी सी काइंडनेस है. इसके बारे में मैंने रेडियो पे बड़ी अच्छी स्टोरी भी सुनाई थी. इसके बारे में हम कोई और सेशन करेंगे जिसमें मैं आपको ये 2-3 कहानियां सुनाऊंगी जो कि बहुत ही अमेजिंग और मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग थे. तो मैंने ये स्टोरी सुनाई हैं और ये रियल स्टोरीज हैं कि एक सिर्फ छोटा सा काइंडनेस ऑफ हाउ आर यू से कैसे किसी की जिंदगी बदल सकती है. एक छोटे से काइंडनेस ऑफ स्माइल से कैसे जिंदगी बदल सकती है और आप क्या क्या कर सकते हैं. So it's not easy to smile when you have pain. और हर किसी के पेन है जिंदगी में, कोई भी हो सकता है. वो वालिदैन का हो सकता है, बच्चों का हो सकता है, दफ्तर का हो सकता है, या कोई बिजनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. But these are all challenges, these are all tests of life. So don't put it on your mind. आप उसको अपने जहन पे सवार ना करें. Live it up with a smile. And अल्लाह ताला से वो वाली बात है ना, आप ये बोला करें, why me, try me. जब आप ये कहते हैं ना try me, तो बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं. अल्लाह ताला आपको वैसी ही जबरदस्त पावर दे देता है. और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं पूछती हूँ what is your power? I say my power is that I spread smile. That is my power. That's what I feel. I'm very powerful because I have this smile to spread with people. So this is very important कि आप अपने से ज्यादा दूसरों का दुख सोचें. अपने से ज्यादा किसी की, सिर्फ हमारे अंदर एक चीज की बहुत कमी है. वो क्या है कि हम सुनना नहीं चाहते, हम सुनाना चाहते हैं. जब हम सुनाना चाहते हैं तो हम अगले की तकलीफ को समझ ही नहीं पाते, वो क्या बोलना चाह रहा है या वो किस तकलीफ में है. तो अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करें and we become
a good listener. It can help you in relationships also. अभी मैंने recently अपने रेडियो शो पे किया था effective parenting, effective relationship. तो जब हम इन चीजों की बात करते हैं तो ये this is two-way communication. And then जब हम कान देना शुरू करते हैं ना अपना किसी को, हम सुनना शुरू करते हैं मुस्कुराहट के साथ, फोकस और कंसंट्रेट के साथ। अक्सर ये होता है कि पेरेंट्स मुझसे शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा जिद्दी है या सुनता ही नहीं है। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि जब आपके पास आपका बच्चा आता है तो आप क्या कर रहे होते हैं? आर यू ऑन द गैजेट and looking at the gadget and not looking at your child and talking to the child? And हाँ, आपका concentration कहाँ होता है? आपका concentration is on the gadget, on the phone, on the tab, and or otherwise आप माँ है या बाप है वो कह देता है मेरा बहुत जरूरी काम है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है या बहुत इंपॉर्टेंट रिप्लाई करना है, अभी मैं बात नहीं कर सकता या मैं अभी बात नहीं कर सकती। तो आप सोचें जब आप ये करते हैं तो फिर आपका बच्चा आपको देख के वही करेगा। यू आर द रोल मॉडल फॉर योर चिल्ड्रन। सो प्लीज, अब इसी से मैं कहूंगी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई अगर बात करने आता था तो वो हर चीज छोड़ के अपनी पूरी बॉडी को मूव करके उस शख्स के सामने बिल्कुल फेस टू फेस बैठते थे और बिल्कुल आंखों से आंखें मिला के मुस्कुरा के उसकी बात सुनते थे पूरे ध्यान के साथ, कॉन्सेंट्रेट के साथ। हम नहीं करते ये, and that is where we have problem. That is why the children are more stubborn now. That is why the children don't come to the parents now. And the problem is not with the children. The problem is, unfortunately, with due respect, it's the problem with the parents. So ये छोटी छोटी चीजें अगर हम जिंदगी में अपनाना शुरू करें और हम थोड़े देर के लिए वो गैजेट हटा दें, और मैं इस पे भी आपसे बात करूंगी कि गैजेट हटाना क्यों जरूरी है आगे जाके। तो let's go on the next slide. अच्छा जी, हम चाहते हैं कि हम कंट्रोल में आ जाए, हम चाहते हैं हम हर चीज को कंट्रोल करें, हम चाहते हैं हम अपने बच्चों को कंट्रोल करें। द रिमोट कंट्रोल शुड बी इन आवर हैंड। वो चाहे टीवी का हो, एसी का हो, जिंदगी का हो, हम हर किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं। वी कांट ऑलवेज कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू अस, वी कांट। ये तो हमारे पास, ये तो हमारी चीज ही नहीं है, तो अल्लाह की तरफ से है। तो बट आई एम 100% sure that gracing your face with the grin can seriously change your internal and external experience. यानी कि अगर आप grin करते हैं तो 100% it is trial and trusted, it will change. Your smile is something that should be worn often. So make it a priority to surround yourself with people, places, things that brighten your day and vow to be the positive, happy person in your group of friends. जो मैंने अभी बात की कि जब आप लोगों में बैठते हैं तो एक इंसान भी अगर पॉजिटिव एनर्जी के साथ, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एनर्जीज रखी हैं, देयर नेगेटिव एनर्जीज, देयर पॉजिटिव एनर्जीज, इट्स टोटली अप टू यू व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज यू आर टेकिंग इन। जब मैं कोई सेशंस या ट्रेनिंग कर रही होती हूँ तो आई एम एक्चुअली डूइंग दिस एक्टिविटीज ऑफ हाउ टू टेक इन पॉजिटिविटी एंड हाउ टू डिस्चार्ज द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम योर बॉडी एंड योर माइंड। These are some activities which we can't do online. हम इंशाल्लाह कभी physically करेंगे तो इस पे भी हम काम करेंगे. But I will give you some pointers to how to relieve your stress in few seconds, which will be do in a little while. And so this, तो आप जब वही वाली, अल्लाह ताला ये भी तो कहते हैं ना, गुड कंपनी इज ऑलवेज गुड, अवॉइड बैड कंपनी। अच्छे लोगों में बैठते हैं तो आपको मुस्कुराना भी सीखते हैं, गीबत से दूर रहते हैं, गॉसिपिंग से दूर रहते हैं, आप मुस्कुराते हैं, अच्छी बातें करते हैं, दीन की बातें करते हैं, सोशल चीज़ों की बातें करते हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ गुड थिंग्स रादर देन गॉसिपिंग एंड यू नो backbiting about anybody else, which is the wrong thing to do, and we should stay away from such thing. उसकी कोई छूट भी नहीं है और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इन चीज़ों से बिल्कुल दूर चले जाएं. So your group of friends, and be sure to look people in their eyes and show them your pearly whites. I always say जब मैं सेशन कर रही हूँ तो please show your pearly whites. जैसे इसीलिए तो अल्लाह ताला ने आपको सफेद कलर के दांत दिए हैं ताकि आप उनको दिखाएं और मुस्कुराएं. But again, to the right person, ये नहीं कि गलत लोगों को मुस्कुराना शुरू करते सही. मियाँ बीवी एक दूसरे को देख के स्माइल करें, बच्चे माँ बाप को देख के स्माइल करें. Do the smile part than the right people, okay? Achha, the world is simply a better place because of your smile. Let's go to the next slide. Achha ji, smiling is the best way to face every problem, to crush every fear, to hide every pain. True believers always have two things on their lips: silence and smile. Silence, ये भी एक बहुत important चीज है. कभी आपने सुना है खामोशी का रोजा रखना?
आपने बात नहीं करनी पूरे दिन। जैसे मैं कहती हूँ गैजेट्स फास्टिंग, साइलेंस फास्टिंग, और फास्टिंग तो वैसे ही होता है। तो देयर आर लॉट ऑफ फास्टिंग, इट एक्चुअली हेल्प्स योर ब्रेन एंड बॉडी। सो जहाँ आपको लगता है कि आप बोलने से गड़बड़ हो सकती है, तो वहाँ साइलेंस करें और स्माइल करें। दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। आई हैव मेनी प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ, बट माय लिप्स डोंट नो दैट। इमेजिन दिस, I have many problems with my life, but my lips don't know that, and they just keep smiling. So isn't that amazing? It is always here. It is not here. So when you smile, a lot of things change in your life. Some people always smile because they know smiling is easier than explaining why they are sad. It's actually true. अगर आप किसी से कहते हैं मुझे ये तकलीफ है, तो मुझे क्यों तकलीफ है, कहाँ से हुआ, क्या हुआ, तुम डॉक्टर के पास गए, दवाई लेके आइए, तो बेहतर होता है कि आप बजाय ये शेयर करने की कि मुझे क्या तकलीफ और दुख है, क्योंकि हर किसी का दुख बहुत ज्यादा है। हम ये नहीं कह सकते कि मेरा दुख तुमसे ज्यादा है, आपसे ज्यादा है, या आपका दुख मुझसे ज्यादा है। तो we all share a burden of something or the other on our back. So it's okay. But smiling actually makes things better. So always remember to be happy, because you never know who's falling in love with your smile. Isn't that amazing? If someone falls in love with your smile, that's a wonderful feeling, and you should do that more often. Make it a practice that you have to smile. Let's go to the next slide. Peace begin with a smile. And I always say this, कि इंसान लड़ाई झगड़े से, कत्ल गारत से, इन सब चीजों से कभी कुछ नहीं होता। स्माइल, जो टेबलों पे लोग बड़े बड़े सारे बैठते हैं ना, हुक्मरान, वो बैठते हैं, तो जब आप स्माइल एक्सचेंज करते हैं तो सीज फायर होते हैं। तो स्माइल बिगिंस, पीस बिगिन विद अ स्माइल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर आज आप ये तय कर ले कि अगर आपकी जिंदगी में कोई मसले मसाइल किसी इंसानों के साथ हैं, आपके बहन भाइयों के साथ हैं, पेरेंट्स के साथ हैं, पेरेंट्स के साथ तो खुदारा ना रखे, माफी मांगे, वो तो भाई वो जन्नत है आपकी। तो जरूर गलतियां इंसान से होती हैं, हमें गुस्सा जल्दी आ जाता है, बिकॉज यू नो द डेविल इज ऑल अराउंड यू, द शैतान वांट्स यू टू बी एंग्री एंड अपसेट एंड डू रादर बैड थिंग्स। तो वो से माफी मांग लें और चीजों को सुधार लें, मुस्कुराए, गिव दैट जादू की झप्पी एंड जादू की स्माइल एंड फिक्स एवरीथिंग अप, बिकॉज जिंदगी का कुछ नहीं पता। आजकल इतने कम उम्र के लोग कभी हैं and the next day you know they're not there. So I don't know if I'm going to be here tomorrow to tell you about this thing. So this is something आपने जिन्होंने सुन लिया, this is a सदका जारिया. Don't keep it to yourself. You have to spread it to at least 10 people and tell the 10 people to spread it to 10 another people. So the chain should never be broken of this good deed. So a warm smile is the universal language of kindness. आप किसी और मुल्क में जाते हैं जहां आपको लैंग्वेज नहीं पता हो, आप सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, तो अगला वाला भी मुस्कुरा के वो कोशिश करता है अपनी जबान में हेल्प करने के लिए कि आपको क्या मसला है, बताएं, मैं कुछ हेल्प करूं. Imagine this, how amazing it is. So it's a universal language of kindness. So warm smile has to be on your face. We shall never know all the goods that the smile can do. Yes, if you don't smile, then you will not know that those good feeling chemicals are releasing in your brain, and they're actually helping you to think positive and be positive. So we need to smile more often. A real person smile is in trouble, gathers strength from distress, and grows brave by reflection. So how amazing the smile is. Smile at strangers and you just might change a life. जैसे मैंने आपसे कहा कि काइंडनेस, एक स्माइल, किसी की जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें हैं, लेकिन आप उसको मुस्कुरा के सिर्फ मुस्कुरा दें और कह दें हाउ आर यू, तो आप उसकी जिंदगी बदल सकते हैं. तो इमेजिन स्माइल एट स्ट्रेंजर्स व्हिच कैन एक्चुअली चेंज देयर लाइफ. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक अराउंड यू एंड सी व्हाट इज हैपनिंग एंड नो. तो वो तभी हो सकता है जब आप अपने जिंदगी में गैजेट को थोड़ा कम कर दें और लोगों को ज्यादा समझना शुरू करें for a better reason. Let's go on the next slide. Smile is a free makeup. Smile is a free therapy. Islam is so beautiful. Imagine. I always say हमारा जो दीन है वो बहुत ही खूबसूरत है, जिंदगी खूबसूरत है. And imagine Islam is so beautiful that you get rewarded just by smiling. मतलब अमेजिंग बात है ये कि सिर्फ एक मुस्कुराने से आपको रिवॉर्ड मिल रहा है. क्या बेहतरीन चीज है. आप सोचिए दिन में आप सिर्फ मुस्कुरा के लोगों को देखते रहे, मुस्कुराते रहे, और कितने सारे रिवॉर्ड्स अल्लाह ताला आपको दे देता है. Isn't that brilliant? Isn't that amazing? I mean, इससे बेहतरीन क्या हो सकता है हमारे लिए.
And every act of goodness is charity, even if it is just a smile. And that is, who says that? Our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So every good act of goodness is charity, even a smile. So जैसे कि मैं शुरू से आपको बताती आ रही हूँ कि what is the powerful impact of smile, हम religiously भी देखें या ethically भी देखें या morally या socially भी देखें, हर तरीके से smile आपको help करता है to feel good. Let's go on the next slide. Facts about smiling. Smiling is more contagious than COVID or any flu. Yes, I believe that, and I have actually been there and tried it all. Smiling is our first facial expressions. Yes, babies are born with the ability to smile, but a lot of people don't know. Smiling makes you more attractive to others. A smile is the universal sign for happiness. Smiling is intellectual, intercultural. It's easier to smile than to fawn. A powerful chemical reaction in the brain which releases and makes you feel better. So imagine ये सारी वही चीजें हैं जो कि एक smile आपके लिए कर सकता है. Let's move to another slide. Yeah, अच्छा जी. अब ये जो है साइलेंस एंड स्माइल की जो मैंने बात की थी कि देयर आर टू पावरफुल टूल्स और हमारे वो चेहरे पे है, ठीक है, हमारे अंदर. मतलब स्माइल इज द वे टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स एंड साइलेंस इज द वे टू अवॉइड मेनी प्रॉब्लम्स, which is how important it is. Am I audible? Can everybody hear me? Am I audible? Can you hear me? Yes, Mariam, we are hearing you. Oh, great. अच्छा. So now imagine silence और smile में कितना powerful tool है हमारे पास कि smile से हम many problems को solve कर सकते हैं और silence से हम बहुत सारे problems से दूर रह सकते हैं. Smile at stranger and you just might change your life. ये मैंने पहले भी कहा. A smile is a curve that sets everything straight. Imagine, smile is a curve which sets everything straight. It's a beautiful quotation and I love it. A smile is on your face, which is actually a round curve thing, but it is fixing so many beautiful things. A smile is happiness. You'll find right under your nose. जो मैंने आपसे कहा, smile is right under your nose. Okay. Basit, आप पढ़ रहे message? There are message coming. बासित आपकी आवाज नहीं आ रही, आप unmute करें. I can't hear you. चलो भैया, एडमिनिस्ट्रेटर ही म्यूट हुआ हुआ. मैंने बिल्कुल सही कर लिया. मैं बिल्कुल पढ़ रहा हूँ और जो ना इनको स्लाइड्स बिल्कुल मिल जाएंगी. इनसे गुजारिश है कि अपना पूरे नाम और ईमेल आईडी मुझसे शेयर करें. मैं सर्टिफिकेट भी दूंगा और स्लाइड भी शेयर कर दूंगा. इंशाल्लाह. Wonderful. Thank you. Okay. You're going wonderful. Thank you. Can we go on the next slide, Basit, please? Okay, ji. Beautiful reason to smile. Smiling makes us attractive. Smile changes our mood. Smile is contagious. Smiling relieves stress. Smiling boosts your immune system. Smiling lowers your blood pressure. Smiling releases endorphins, the natural painkiller, and serotonin. यानी कि smile आपका natural painkiller है. Smiling lifts the face and makes you look younger. Wow, isn't that amazing? It's a beautiful feeling. So these are beautiful reasons why you should be smiling more rather than being upset and angry and a frowning face. Let's go to another slide now. It is pretty backward idea, isn't it? Happiness is what makes us smile. How can the reverse also be the true? यानी कि मैं backward इसलिए कि वो कहते हैं कि smile से कैसे सब चीजें ठीक हो सकती हैं कि how can the reverse also be true? So the fact is, a smile spurs a chemical reaction in the brain, releasing certain hormones, including dopamine and serotonin. Dopamine increases our feelings of happiness, and serotonin, the release is associated with reducing stress. तो ये दोनों जब आप स्माइल करते हैं, ये दोनों केमिकल एक साथ आपके ब्रेन में रिलीज होते हैं, जो कि आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और आपकी हैप्पीनेस की फीलिंग को इंक्रीज करता है. तो दोनों चीजें एक साथ हो रही होती है साइड बाय साइड. So just by smiling, you are doing a great deed to yourself actually. So it's beautiful. I think it is something we most of us know, but then we all need a reminder that
अल्लाह ताला को भी खुश शक्ल पसंद है, लोग मुस्कुराते हुए पसंद है, इसलिए हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त मुस्कुराते रहते थे, कभी उनके चेहरे पे या कभी उनके बातें पे कोई बल नहीं आए। सुभान अल्लाह, दैट्स अमेजिंग। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। जी, स्माइल, इट्स अ फ्री थेरेपी। I tell people कि जी आपको किसी साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या कोच के पास जाने की जरूरत है। अगर आप think just by that's it. Am I audible? Can everybody hear me? Can you hear me? Hello. Can anybody? Yes, मुझे yes. सिर्फ इतना बता दें. Can you hear me or not? Yeah. आपकी आवाज नहीं आ रही ना अभी, वो बैक हैंड पे वो है ना मेरे साथ, तो नहीं बोलते तो मुझे शुरू आवाज नहीं आ रही। ओके, अमेजिंग, चलिए ठीक है, यू कैन हियर मी, दैट्स वंडरफुल। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? आपकी आवाज कहीं चली गई है? अच्छा जी बिल्कुल जनाब। Okay, जी. Okay, even forcing a fake smile can legitimately reduce stress and lower your heart rate. जब आपको palpitation होता है ना, अक्सर लोग कहते हैं, ख़वातीन कहती हैं मुझे palpitation हो रहा है, तो अगर even if you don't want to smile but you fake that smile on your face, it can actually lower your heart rate. So ever had someone tell you to cheer up and smile जब आपकी तबीयत खराब हो रही होती है? कभी किसी ने आपसे ये कहा है कि आप थोड़ा सा मुस्कुरा ले, ठीक हो जाएगा? तो आपको ये सुनने को आया, you crazy, मेरी तबीयत खराब है, मुझे ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, या मेरी हार्ट बीट बढ़ रहा है, you want telling me to smile? But actually it helps because scientifically the chemicals which are activating in your brain, it helps you to lower your heart rate and stress level. So it's probably not the most welcoming advice, but especially when you are feeling sick, try to or just plain down in the dumps wali baat ke mujhe bilkul I feel I'm sinking down and I can't think, I can't focus, tab bhi. But there is actually a good reason to turn that frown upside down, is that when you start smiling, so it really helps. Okay, it really helps to science has shown that the mere act of smiling can lift your mood and possibly even prolong your life, which is why I'm repeatedly saying it, because it is that important to smile. It helps you in your health, physical health, mental health, sab cheezon ke liye. It is actually amazing thing to do just by smiling. So let's go on the next slide. Fake it till you make it. Yes. अगर आपको स्माइल नहीं भी करना, फिर भी जस्ट बस जबरदस्ती भी अगर आप अपने स्माइल लिप्स को हिलाते हैं और मुस्कुराते हैं, वो भी आपके ब्रेन को सिग्नल करता है। इमेजिन दैट कि आप सिर्फ नहीं चाहते हुए भी सिर्फ आप फेस पे कोशिश कर रहे हैं एक फेक स्माइल लाने की, उससे भी वो आपके ब्रेन को ट्रिगर करता है, ट्रिक कर देता है आपको। आई मीन इमेजिन इट ट्रिक्स यू टू relieve those same chemicals. In other words, smiling can trick your brain into believing you're happy. Imagine that. Isn't that amazing? Which can then spur actual feeling of happiness, but it doesn't end there. It has been shown over and over again that depression weakens your immune system, while happiness, on the other hand, has been shown to boost up our body's resistance. So imagine, आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करना शुरू करता है, जो कि डिप्रेशन से बिल्कुल डाउन चला जाता है। तो एक स्माइल faking is also giving the same signal to your brain. That is scientifically proven. So imagine. तो आज मेरे ख्याल से आप लोग सब अपने आप से एक वादा कर लें कि बस आज से आपने मुस्कुराना है, ताकि आपके हेल्थ इश्यूज और अदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ताकि आप ज्यादा मुस्कुराना शुरू करेंगे तो आपके मसले मसाइल, और
जो भी जहाँ पे दफ्तर में जाता है या फैक्ट्री में या कोई भी कंपनी है, तो आज से दरवाजे के बाहर लगा दें कि यू आर नॉट अलाउड टू कम इनसाइड इफ यू डोंट हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। वो जो कहते हैं ना, विदाउट मास्क नॉट अलाउड, यू से विदाउट स्माइल नॉट अलाउड। So this is something you need to put up in your offices outside the door, and have a smile on your face before entering this place. अगर हम ये छोटी छोटी चीजें करना शुरू करेंगे अपनी जिंदगी में, तो आप सोचें हम कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। We can fix lot of things around us. ये जो हमारे साथ आजकल जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल इतने ज्यादा हैं, हमारी एंजाइटीज, डिप्रेशन और so many sickness, जो ऐसे ऐसी बीमारियां जो पहले नहीं होती थी, इतने कम उम्र के बच्चे, why are we so suicidal rates are going higher every 5 minutes? एक बच्चा कमिट सुसाइड करता है, क्यों? हमारी जिंदगी में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं? हमने हर चीज को अपने सर पे सवार कर लिया है। हमने बच्चों को जो हम नहीं कर सके हम अपने बच्चों पे डाल देते हैं कि भाई तुमने करके दिखाना है। Don't put burden on your children, don't put burden on your colleagues, don't put burden on your workers, don't do that. It is, हमारी जिंदगी में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमने एक चश्मा अपना लगाया होता है, हम कोशिश करते हैं कि उसी चश्मे से हम सबको देखें। Take that चश्मा off, because we need to see people with their perspective. उनको उनकी तरह ही देखें, उनको आप अपनी तरह ना देखें कि मेरी तरह बन जाए। हर कोई आपकी तरह नहीं हो सकता। क्या पांचों उंगलियां बराबर हैं? क्या हमारे थंबप्रिंट एक जैसे हैं? अल्लाह ताला ने सबको थंबप्रिंट अलग दिए हैं। अल्लाह ताला ने इवन आइडेंटिकल ट्विन्स हैव देयर ओन माइंड टू थिंक। तो आप कंपैरिजन करना छोड़ दें। आप इस रैट रेस में ना जाएं कि मेरा बच्चा हैज टू कम ए ग्रेड लाना है, उसने फर्स्ट डिवीजन से पास करना है। कुछ नहीं पता चलता। जब आप नौकरी शुरू करते हैं तो कोई नहीं पूछता तुमने कॉलेज में ए लिया था कि बी लिया था। क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं आप बच्चों को? आई वर्क विद दीज पीपल, आई वर्क विद द साइबर सिक्योरिटी वालों से जाके मैं सेशन कर रही होती हूँ, मैं ये हरासमेंट पे सेशन कर रही होती हूँ, सुसाइड पे सेशन कर रही होती हूँ। तो आई ऑलवेज थिंक कि व्हाई इज इट इंक्रीजिंग? क्यों हमने इतना बर्डन डालना शुरू कर दिया? क्यों हमारे लिए जिंदगी में ए आना, परफेक्ट होना जरूरी है? हम परफेक्ट नहीं हो सकते। वी आर ह्यूमन बीइंग्स बट वी आर नॉट परफेक्ट बीइंग्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो प्लीज खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है, जिंदगी को आसान बनाएं, अपने लिए भी और अपने प्यारों के लिए भी, अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने कोलीग्स के लिए, अपने वर्कर्स के लिए, सबके लिए जिंदगी को आसान बनाएं। अच्छी अच्छी छोटी छोटी चीजों को इंट्रोड्यूस करें, अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें, छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करें अपने लोगों के साथ। आप यू विल फील दिस डिफरेंस, यू विल सी द डिफरेंस, यू विल सी हाउ पॉजिटिव योर एनवायरनमेंट बिकम। वो जो आपके स्कूलों में, दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में जो वो नेगेटिव एनर्जी है ना, जब आप जाते हैं, you're stressed, when you're carrying out your stress, because there is only negative energies around you. So start grabbing those positive energies, start smiling, start putting positive effect to all these things, and you will see, you will learn, you will see, you will practice that life is much better. It is beautiful. मैं हमेशा कहती हूँ जिंदगी खूबसूरत है, हर सूरत में है। अल्लाह ताला का हमने अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना बंद कर दिया, क्योंकि हम शुक्र ही नहीं करते कि मैं सांस ले रही हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, ये फ्री में है, हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ी इसकी। लेकिन अगर आपकी सांस बंद हो जाए तो आप सोचें आपको रोज का कितना देना पड़ता होगा हॉस्पिटल में। कभी आपने ये सोचा है कि हम फ्री में सांस ले रहे हैं? अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हुई हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम सूंघ रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने दोनों हाथ सलामत दिए हैं बात करने के लिए, काम करने के लिए, पैर दिए चलने के लिए। अगर कुछ कमी है, कोई तकलीफ है, तो इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके। बस अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा एक्सपीरियंस हो या अच्छा एक्सपीरियंस हो। इसलिए शुक्र अदा किया करें कि वो वर्स भी हो सकता था, इसलिए शुक्र अदा किया करें कि यू हैव कम आउट ऑफ इट। So there are so many things to be happy and to be grateful. अगर हम शुक्र अदा करना शुरू कर दें, हम ग्रैटिट्यूड रखें अपनी जिंदगी में ज्यादा, तो हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं, हमारे इर्द गिर्द के एनर्जीज बेहतर उतर सकते हैं, हम मुस्कुराना सीख सकते हैं, हम खुश रहना सीख सकते हैं। एंड इट इज, हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। मैं मुस्तकिल कहती हूँ, इट इज जस्ट, यू जस्ट नीड टू फोकस एंड जस्ट टेल योर माइंड, टेल योर ब्रेन
that this is what I need to do and this is what I'm not going to do. I'm not going to gossip, I'm not going to backbite, I'm not going to be angry, I'm not going to be upset with anything. अगर कोई गलती करता है तो कोई बात नहीं, गलती से ही हम सीखते हैं. हाँ, वो गलत है कि आप गलती करके उससे ना सीखें, हर चीज से हम सीखते हैं. तो why can't we learn positivity? Why can't we learn positive from the negative? So there is always a learning. जिस दिन हम ये कहना छोड़ दें कि हमें तो सब आता है, उस दिन हम ग्रो करना और जीना छोड़ देते हैं. तो लर्निंग नेवर एंड्स. मैं तो आज अभी तक पढ़ाइयाँ कर रही हूँ, अभी तक पढ़ रही हूँ. मुझे लगता है कि मुझे पता होना चाहिए जिंदगी में हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर चीज को समझें और उसको प्यार से समझें और समझने की कोशिश करें. हर किसी के मसलों को आपका दुख किसी और के दुख से बड़ा नहीं हो सकता. They all live in there. We can't be in anybody else's shoes. We can't. और ये मुझे अक्सर लोग कहते हैं, मुझे रेडियो में जब मैं एक्सपर्ट स्पीकर के लिए जाना चाहिए तो मुझे लोग कहते थे आप मुस्कुराते रहती हैं क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैं कहती थी कि you don't know that. I have seen a lot of challenges in my life. I've seen a lot of hardship in my life. I have lost both my parents together. इससे बड़ा सदमा किसी की जिंदगी में क्या हो सकता है. लेकिन मैंने मुस्कुराना नहीं छोड़ा, मैंने अच्छी बातें फैलाना नहीं छोड़ा, मैंने अच्छी चीजें करनी नहीं छोड़ी. Because I know my parents would be happy to me to do all these things because I'm spreading positivity, smile, happiness in everybody's life. So it is very important. It's a small little thing, but it has a big impact in your life. So let's go on the other slide. बासत, ये मुझे बताएं हमारे पास कितना टाइम है? 5 बज चुके हैं और टाइम जो है वो बिल्कुल हो चुका है, तकरीबन पूरा हो चुका है. तो हम क्या ऐसी हमें खत्म करना पड़ेगा अभी? हाँ, नहीं, प्लीज गो अहेड. आप देखें, पूरा कंप्लीट कीजिए एज पर योर कन्वीनियंस. ठीक है. आई एम एंजॉयिंग द सेशन माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. Jazakallah khairan. I hope everybody is enjoying and learning something today. Yes, Maria. This is a very beautiful saying by Mufti Menik. I find him very interesting because he has a humor. मैंने जब भी इनका कोई समन्स, मतलब जो भी इनकी कोई बातें या मैंने इनका कोई दर्स सुना है, तो मैंने इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट देखी है. Very glowing face, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, very smiling face. So मैंने इनका ये उठाया कि one of the simplest rules of happiness is smile. ठीक है, even though your heart may be sad, you firmly believe that Almighty is fully in control. Isn't that beautiful? But that's the simplest rule of happiness, is smile, yeah? And then when we submit to Allah Ta'ala, that jo bhi hamare saath ho raha hai, we have nothing to do with it. So when you submit it to Allah Ta'ala, then Allah Ta'ala, you've given your things to Him. You have firm belief that He's going to fix everything up. So inshallah Ta'ala, theek ho jayega. Everything will be in control. So let's go on the next slide. And I'll share जल्दी करना पड़ेगा इससे पहले कि टाइम निकल जाए. अच्छा जी, smiling absolutely changes way of, I think this is something I've experienced. Smiling absolutely changes the way I think and feel. I purposely spend 60 seconds every morning smiling to supercharge my mood. It's a part of my morning routine. If something goes odd during the day, I usually use smiling to quickly shift my mood. It only takes 10 to 15 seconds for it to make differences for me. It helps me feel less stressed, transforms my mood quickly, and put me in a better place. So this is what I have experienced, and I tell everybody, 60 seconds day every morning, and when you feel stress in your workplace or wherever you are, just smile. 10 to 15 seconds is nothing. It changes your mood, and it is a fact. It's tried and tested. You do it, and then you tell me. And do get back to me when you start practicing that. I want to hear from you. Okay, the next slide. How smiling affects your brain. Each time, ये वाली वही जो हमने पहले भी बात किया था, दोबारा से हम करते हैं. The people who have joined us right now, each time you smile, you throw a little feel-good party in your brain. So there's a party going on in your brain, क्योंकि वो आपके टच सारे पटाखे फोड़ना शुरू करता है आपके केमिकल आपके brain में, so that the act of smiling activates neural messaging that benefits your health and happiness. For starters, smiling activates the release of the neuropeptides, which that works towards fighting off stress. Imagine that.
कि क्या क्या ब्रेन में आपकी चीजें हैं जो कि आपको एक्टिवेट करने से, मतलब न्यूरोपेप्टाइड्स एक ऐसा केमिकल है जो कि वो फाइट करता है आपके स्ट्रेस को कम करने से, एंड जस्ट बाय स्माइलिंग आप उसको एक्टिवेट करते हैं एंड आपका स्ट्रेस लेवल नीचे हो जाता है. तो I have all the things मैं आपको जो दे रही हूँ, scientifically, Islamically, everything is proven. So you smile and things get better. Let's go to the next stress. Next slide. Okay. Now, ये मैंने जरूर रखा because आपने नोट किया कि जो emojis होते हैं वो येलो होते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैंने इसमें ये लिखा डाला ताकि आपको अंदाजा हो कि क्यों ये येलो होते हैं, उसका फायदा क्या होता है. So what are the positive effect of the color yellow? Activating memory. Yellow actually, जब मैं I was in the fashion industry तो मैं अपने हर क्लाइंट को एक येलो कलर का जोड़ा जरूर बना के देती थी. So imagine I've been practicing color psychology is very strong thing. It affects your overall health and your well-being. So yellow color is so important that it actually activates your memory cells, promoting communication and increasing vision and self-confidence. Imagine how powerful is yellow color. So that's why everything is yellow. मैंने आपको शुरू में सारे sites दिखाए ना, वो सारे yellow थे. So I hope you all were feeling happy and you were smiling while looking at the slides, and it would help. Yellow would be able to trigger all these positive effects. It is thought to have a direct influence on the right side of your brain. Imagine. Yellow color gives the direct influence on your right side of the brain and where deep thinking and the capacity for intuition resides. So imagine how powerful is yellow color. So अगर आज आपके पास नहीं है पीले कपड़े तो जरूर बना लें, आपके वार्डरोब में होना चाहिए. जहां आपको ऐसा लगे कि मेरी थोड़ा सा लेवल डाउन हो रहा है, फौरन वो येलो कपड़े निकाल के पहन लें. चाहे वो मर्दों के लिए येलो टी शर्ट है, खवातीन के लिए येलो दुपट्टा है, येलो शर्ट है, कुछ भी है. तो येलो इज दैट इम्पोर्टेंट एंड दैट पावरफुल शेड. मैं हमेशा कहती हूँ व्हेन यू फीलिंग डाउन एंड यू लो तो रेड पहने, उससे आपको पावर बूस्टर होता है रेड कलर. बट येलो इज एक्चुअली इट एक्टिवेट्स योर मेमोरी सेल, प्रमोट्स योर कम्युनिकेशन एंड इंक्रीजिंग विजन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. जब आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो पीले कपड़े जरूर पहने. So let's go on the next slide, and we are actually ending up, and I'm going to give you. Can I ask a question? जी बिल्कुल, go ahead. अगर मैंने येलो पहन लिया तो मेरी दूसरी शादी की अफवाहें उड़ जाएंगी. How can I protect myself? वो बोलेंगे उपटन में आ गया ये. How can I protect myself? ये वो वाली बात है जैसे मैं किसी को देख के मुस्कुराऊं तो कह रही है is she mad or something? Why is she smiling? वही ना. To change the brain, वो जो सोचने की है ना कि हमने एक एफिलिएट कर लिया है कि जी येलो इज विद द उपटन माइयों तो वैसे हमारे इस्लाम में का हिस्सा ही नहीं है, ठीक है ना. और येलो कलर अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत रंग दिए हैं हमें, रेनबो के जो कलर्स उसमें येलो है. अच्छा अब वो रेनबो, आई लव रेनबो कलर्स, लेकिन अब उसको किससे हमने एफिलिएट कर लिया है, वो एलबी उससे कर दिया. मैं बोलना नहीं चाहती. एनीवे, बट कलर्स अल्लाह ताला ने जो हमें दिए हैं, जो फूल हैं, जो पीले. अच्छा आपने कभी even mango for Saturday, don't you feel happy looking at a mango? It's yellow color. You can't paint it purple. Common man. Mango man actually. He's a mango man. आम आदमी आ गया ये. जी आम तो पीला, आम आदमी भी पीला है. पीला आ गया. It actually helps them telling you psychology. मैं हमेशा ही कहती हूँ अल्लाह ताला ने जो हमारी जिंदगी में रंग बिखेरे हैं, चाहे वो परिंदे हैं, चाहे वो फल हैं, चाहे वो फूल हैं, they are beautiful. So we should appreciate and acknowledge them, and we should use it in our life because everything has a meaning. बगैर मीनिंग की तो कोई चीज है ही नहीं ना हमारी जिंदगी में, ना अल्लाह ताला ने पैदा किया है, तो फिर हमें इसका फायदा उठाना चाहिए. Let's go on the next slide. तो अगर बासित साहब पीला पहने तो वो कोई माइयों की अलामत नहीं है. अगर आपकी Thank you. Okay, yellow makes you feel happy and it is actually वो जो अभी सारी हमने बातें कर ली कि वो आपको अच्छा फील कराता है. जब तो शायद माइयों में भी पीला पहनाने लगे हैं ना लोग. जो पीला खुशी, जो बहुत खुशी है शादी हो रही. Cluster of mango man. A lot of cluster of mango mans. अब मायो नहीं बोलेंगे.
अच्छा जी, yellow is perhaps the most energetic and warm colors. It is associated with laughter, hope and sunshine. See, मैंने yellow की बात की तो हमने सबने हंसना शुरू किया. Basit, will you agree to me? You are just laughing right now because of yellow. जी बिल्कुल, मैं येलो में मैं कसम खुदा की खा रहा हूँ एक्चुअली. मैं ये सोच मैं ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज is the sun, which is yellow. Yes. और sun के Yes. बगैर अगर आप सोचें अगर सूरज निकलना बंद हो जाए तो the world will be a gloomy, depressed and a night place to live in. So अल्लाह ताला Yes. ने हमारा जो सूरज है उसको भी golden yellow रखा है. So yellow has the power to change many things. आप देखें वहाँ पे, अच्छा हमारा जो FM 107 का जो स्टूडियो ना वो पहले ग्रीन सा कुछ था. जैसे ही उन्होंने उसको येलो पेंट किया ना, the day I entered, I was so happy. I was like, wow, I love the yellow. So I was like, अच्छा आपको मैंगो जैसा नहीं लग रहा? मैंने कहा मैंगो भी तो अच्छा ही फल है. I love mango also. So I love yellow. But when I see yellow, I feel automatically I feel happy. And it is the sunshine in your life actually. So ancient yellows help give you design energy, will make the viewer feel more colorful and bright and everything. So yellow is something which you need to have in your wardrobe. So आज आपने एक तो वादा करना है कि आपने हंसना है, मुस्कुराना है, और आपके wardrobe, आपके अलमारी में एक पीला कलर जरूर होना चाहिए ताकि आप उसको पहने और मस्त हो गया, ये मस्त है एक्चुअली. आई विल डू इट टुडे इंशाल्लाह. चलिए जी, नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं. और नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है? अच्छा जी, अच्छा वापस जाएं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे अभी नहीं आ रहे. मैं आपको एक छोटा सा बिफोर वी गो एक छोटा सा मैं आपको एक जापानीज मेथड है, एंड इन 3 minutes यू कैन एक्चुअली फील स्ट्रेस फ्री. वो मैं आपको इधर ही करके बता सकती हूँ, तो आप यू कैन प्रैक्टिस इट. इट्स वेरी इजी. इट्स एक्चुअली इट्स एन एंशिएंट जापानीज टेक्निक जो कि सेल्फ रिलैक्सेशन के लिए होता है 5 मिनट में, एंड इट्स ऑल विद योर फिंगर्स. ठीक है, तो अब इसको आप गौर से देखिएगा, समझिएगा कि इसमें करना क्या होता है. इट इज एक्चुअली, इट कैन बी डन एनीवेयर एट एनी टाइम. आप ट्रैफिक लाइट में अगर हैं, गाड़ी में, तब भी आप कर सकते हैं. आप ऑफिस में कर सकते हैं, आप कहीं घर में कर सकते हैं, आप स्कूल में हैं तो वहां कर सकते हैं, आप सैलून में तो आप सैलून में कर सकते हैं, आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, बिकॉज इट टेक्स 5 minutes एंड इट इज विद योर फिंगर्स. ठीक है, so it's important to understand that each of the fingers of our hand represent a different feeling and attitude. All the fingers, मैंने अभी 5 फिंगर की बात की कि सब बराबर नहीं होते, तो अल्लाह ताला ने हर फिंगर में, हमारे पैर में और फिंगर्स में कुछ अलग डिफरेंट फीलिंग और एटीट्यूड रखा हुआ है. So with that is I'm going to tell you how it works. तो हमारी हार्मनी करने के लिए, to bring life energy in it of the body and mind, तो we grasp this finger and then एक फिंगर को लेकर अभी मैं बताऊंगी कैसे करना है, and then with the opposite hand wrapping all the fingers around. अब मैं आपको बता रही हूँ आपने कैसे करना है. मैं आप ये देखें, can you all see me? इस तरह से आपने उंगलियों को पकड़ना है, या तो थंब अंदर कर लें या थंब बाहर कर लें. इट्स टोटली अप टू. अंदर कर लें. इस तरह से आपने अपने फिंगर को दूसरे हाथ के करना. अगर आप लेफ्ट पे करें तो राइट हैंड से करेंगे, अगर राइट से करें तो लेफ्ट हैंड से करेंगे. ओके, इज इट क्लियर? Yes. Can you all hear me? Am I audible? Yes, you are audible. Yes, clear. All right, start. We will start with our thumb. Yes. मेरा ये लेफ्ट हैंड है तो मैं आपको राइट से करके दिखा रही हूँ. We will start with the thumb. आप अपने थंब को इसी तरह पकड़ेंगे जैसे मैंने आपको बताया. ठीक है, इस तरह से. अच्छा, अब आपको पहले बताती हूँ इस थंब से क्यों, थंब में हमारे क्या फीलिंग है. थंब जो है, it helps combat emotions and anxiety and worries. ठीक है, क्या फाइट करता है थंब? एंजाइटी, इमोशंस एंड वरीनेस, जो आपके दिमाग में तकलीफात या कोई टेंशन या स्ट्रेस चल रहा होता है, उसको केटर करता है. ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इस थंब को इसी तरह से अंदर करके या आप बाहर कर ले, जो भी करना है, ये इस तरह से आपने इसको थंब को पकड़ना है. ठीक है, एंड आपके पास घड़ी होनी चाहिए. ओके, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू, इट इज टाइम बाउंड. ठीक है, यू हैव टू हैव अ वॉच इन फ्रंट ऑफ यू so that you can see कि आपने कितने देर उसको पकड़ना है. आपका जो थंब है आपने 59 सेकंड्स के लिए पकड़ना है. कितने सेकंड्स के लिए? और आप फील करेंगे कि उसका जो आपको हार्ट बीट आपके कान में सुनाई देगा in within 59 seconds.
You will feel it. So you can close your eyes and do it. So you can concentrate. It will help you lower your combat your emotions of anxiety and worriness. ठीक है? 59 seconds इसको कर लिया? Done? Okay. Now we come to the index finger. We come to the index finger. अच्छा, index finger आपको क्या करता है? It combats with fear. आपका जो index finger है वो आपके fear से लड़ता है. ठीक है? Now again we do the same thing. ठीक है? Finger आपने ये पकड़ा. इसका मिनट 1 मिनट और 3 सेकेंड है. You have to hold your index finger for 1 minute 3 seconds. आपका index finger आपने पकड़ना है for 1 minute and 3 seconds, and it will fight combat with fears in your life. ठीक है? 1 minute 3 seconds. तो आप 1 minute 3 seconds के लिए आप एकदम you should be calm, and जब आप शुरू करें तो breathe in breathe out करके फिर आप शुरू करें and concentrate for few seconds on that. ठीक है? थंब हमारा 59 seconds था. Index finger हमारा 1 minute 1 minute 3 seconds है. Okay, now we will come in the middle finger. Middle finger जो है, हम जब गुस्सा होते हैं ना लोग क्योंकि हमें नहीं करना चाहिए, but it actually combats to control your anger. Because हम जब गुस्से में होते हैं तो बिला वजह में फजूल काम करके मिडिल फिंगर्स दिखा रहे होते हैं इधर उधर लोगों को. Very bad. So how to combat it? It combats your controls your anger and disappointments. आपने इसको कितने देर पकड़ना है? 1 minute and 6 seconds. 1 minute and 6 seconds. आपने इसको ऐसे करके पकड़ना है. पूरे को आपने बिल्कुल उसको मतलब आपने फिंगर को हग करना है, समझे? ठीक है? 1 minute and 6 seconds के लिए. The middle finger controls your anger and disappointment. So it is 1 minute and 6 seconds. आप ये करके देखेंगे, आपको लगेगा कि वाकई में it helps. It does. ठीक है? 1 minute and 6 seconds के लिए middle finger भी हो गया. Then we come on the ring finger. अच्छा, आपका ring finger क्या करता है? It actually combats to fight depression. Ring finger combats to fight depression and sadness. आपके sadness को और depression के लिए आपका ring finger को आपने इस तरह से पकड़ना है, like you're hugging your finger, the ring finger, and then इसको भी आपने 1 minute 6 seconds के लिए पकड़ना है. Middle finger और ring finger की timing same है, 1 minute and 6 seconds. You will hold your middle ring finger for 1 minute and 6 seconds. ठीक है? This is also the same timing, and this ring finger fights with the depression and sadness. अगर आप ये रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी. आप दिन में 2-3 दफा 4 दफा कर सकते हैं. इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, and it really helps you. ठीक है? Okay, now we come to the pinky finger. ठीक है? Pinky finger जो है वो basically आपको fight का keeps your anxiety calm करता है, increases positivity and confidence. और इसका जो टाइम है सबसे ज्यादा है. इसका टाइम is 1 minute 16 seconds. ठीक है? and it actually is आपकी एंजाइटी को काम डाउन करता है और आपकी पॉजिटिविटी को और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है आपकी पिंकी फिंगर. तो आपकी पिंकी फिंगर के टाइमिंग इज 1 minute and 16 seconds. आपने इसको 1 minute and 16 seconds इसी तरह से आपने इसको पकड़ना है 1 minute and 16 seconds के लिए. और उसके बाद इसी तरह आपने फिर दूसरे वाले को करना है, सेम थिंग. एक हाथ का कर लिया, फिर दूसरे हाथ का सेम ऐसे ही करना है. ठीक है? So the fingers actually represent the worth and the value of our hand and our body, mind and soul. तो जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, it takes actually 3 minutes, 5 minutes max, and दोनों हाथ का आप खत्म कर लें और फिर then एकदम से आपको वो रिलीज करता है. अच्छा, then last is ये जो आपके सेंटर है हाथ का, ये वाला पार्ट, इसको आपने ऐसे दबाना है for 1 minute. ठीक है? Can you see that? ये देखें, ये
ये इतना नहीं कि आपने पूरी जान अपने बॉडी की लगा देनी है, ये नहीं करना है, लेकिन इतना कि आपको ये फील हो, ठीक है। आपको इसके अंदर से आपको ये फील होगा कि आपको इफ यू कॉन्सेंट्रेट यू विल फील द लिटिल वार्मथ इन इट, ठीक है। तो आपने जब ऐसे इसको पकड़ा यूं करके थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए, और आपको हार्ट बीट भी सुनाई देगी आपके कानों में अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे। दिस इज एक्चुअली इट्स अ क्विक रेमेडी टू गेट आउट ऑफ स्ट्रेस। Just 1 minute here and 1 minute here in the middle of your palm. And this is a very ancient Japanese technique to अपने मतलब उससे बाहर निकले। So if you want to calm your mind slightly, press in the center of your, ये आपके mind को calm करता है, in the thumb of the opposite hand and hold it for at least 1 minute. Practice this technique every day to stay relaxed and calm and re-establish the balance within you. So ये आप जब रोज करते हैं तो आपकी सारी चीजें बैलेंस होती हैं, because it actually सारी चीजों मैंने आपको बता दी क्या करता है। तो it's the method is of calming, relaxing, and it works in just 1 minute and 38 minutes में you get, it's amazing. You should try it every day and you feel better. So ये एक छोटा सा मैं आपके लिए तोहफा था जो आज आपके लिए मैंने effective स्माइलिंग के साथ आपको एक मैंने छोटा सा स्ट्रेस फ्री का भी एक एक्टिविटी आपसे करा दी, और दैट वाज फ्रॉम मी। और हम अब लास्ट वाली एक्सीलेंट एक्टिविटी हैं। अच्छा, किसी के पास कोई सवाल है तो वो जरूर पूछ सकता है मुझसे। वैसे जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट हु जॉइंड अस टुडे। I hope that this session was beneficial. मैंने पूरी कोशिश की कि मैं कम टाइम में जितना आपको मुस्कुराना सिखा सकूं सिखा दूं, और कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज। यहाँ तो मुस्कुराने सिर्फ आपने नहीं सिखाए, इस वक्त तो आपने जी। आई एम सो हैप्पी टू। बासित आप जरा मैसेजेस पढ़ लें थोड़े से, ताकि मैं भी कोई जो भी बोल रहे हैं तो आप पढ़ेंगे मैसेजेस। हाँ बिल्कुल, मैं मैसेजेस पढ़ लेता हूँ। और इट वाज अ वंडरफुल सेशन, माशाल्लाह बड़ा मजा आया, इंटरेस्टिंग सेशन है। फारिया हसन जो है वो बोलती वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव सेशन था। और इसके अलावा जो है जफरा जावेद साहिबा ने बोला है ग्रेट लर्निंग, थैंक यू एवरीवन। एंड हैदर साहब बोल रहे हैं कि मैं उपटन तो नहीं लगाऊंगा लेकिन येलो टी शर्ट जरूर पहनूंगा। नहीं मैंने उपटन लगा हैदर भाई आप उपटन नहीं लगाएंगे, टी शर्ट पहनेंगे ना भाई? शर्ट तो मैं खरीद लूंगा, वैसे ही मेरा फेवरेट कलर है। प्लीज टी शर्ट पहनिएगा, उपटन ना लगाइएगा। मैंने बिल्कुल उपटन नहीं, तो आपकी टीवी जरूर कहेंगी कि कुछ गड़बड़ है। देखिए मेरे नाम से आप उल्टे काम ना करें। बिल्कुल ये नहीं सिखाता है। नहीं, it was wonderful session actually, मजा आ गया seriously, and I really thoroughly enjoyed each and every and the second of this session. Oh lovely, I'm so happy to hear that. Anybody else who want to ask any questions, ये YouTube पे अपलोड हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें, आपको लगे कि ये मुश्किल है आपके लिए, तो जरूर आप मुझसे पूछें। It is nothing, it's not a rocket science at all. एक छोटी सी मुस्कुराहट हमारी जिंदगी में बहुत अच्छा चेंज ला सकती है, आपको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी पे ला सकती है। तो हम क्यों ना अच्छे ऐसे काम करें जो हमारे लिए। सो दिस वाज अ स्मॉल, 1 घंटे में मैं वैसे यूजुअली मेरे जो सेशंस होते हैं वो 2। एक सवाल आया है। जी बिल्कुल। वो सवाल हैदर साहब का ये है कि कौन सा कलर जो है वो बूस्ट करता है एनर्जी को? रेड कलर। Got it, thank you. You're welcome. Any other question from anyone else? ये जो आपने कहा था YouTube पे अपलोड होगा, can we get these slides also? आप YouTube पे जब आप देखेंगे तो आपको स्लाइड, उसमें पूरी सारी चीजें होंगी YouTube में, स्लाइड्स भी होंगे वहाँ। वैसे तो usually we don't give the slides away, but you will be seeing it on the YouTube. Okay, thank you. जी। बट अगर आपको कोई चीज आप अपने किसी जगह पे दिखाने के लिए चाहिए तो डेफिनेटली प्लीज आप लें और दिखाएं।
दिस इज सदका जारिया। ईमेल हम लोग and I'd like to share it with my students. Fantastic. बिल्कुल बिल्कुल जरूर। मिस फारिया, इसमें होता है ये तरीका वर्चुअल मीट में ये होता है कि जब ट्रेनर कोई स्लाइड शेयर करता है तो हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इशू करते हैं विया ईमेल। जब वो आपको ईमेल आएगा hrwale@gmail.com से, तो उसी के साथ अटैच हुआ होता है प्रेजेंटेशन, तो वो जरूर आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। बारकाल्लाह है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। याद रखिएगा, और जिनको भी आप दिखा रही हैं उनसे ये कहिएगा कि आगे भी शेयर करें प्लीज। बिल्कुल। मैं मिस मरियम 100% है। प्लीज सॉरी मैं मिस मरियम आपको क्रेडिट भी इसी का दूंगी, जब मैं दिखाऊंगी तो आप ही के उस नाम से दिखाऊंगी। नहीं, बहुत शुक्रिया। बस दुआओं में याद रखिए मुझे। मैं दुआओं की तलबगार हूँ। मैं हर किसी से ही कहती हूँ कि मेरी जो दुआओं की छतरी है वो मेरे साथ नहीं रही। अब मेरे दोनों पेरेंट्स नहीं हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ बस दुआओं की जरूरत है। बाकी अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां करे। और जो मैंने आज ये किया है, इट इज ऑल फॉर द रीजन दैट वी नीड टू बी मोर happier in this world before we leave some legacy behind. So my legacy is that people remember me, that I was the smile coach and I made them happy. Beautiful legacy. Jazakallah ji. Jazakallah. माशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच मिस मरियम आपका कि मेरी रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट की और HR वाला के जो वर्चुअल मीट सेशन को आज हमने माशाल्लाह से कामयाब बनाया। लोग इसको सुनेंगे तो बहुत फायदा लेंगे, और स्माइल हमारी जिंदगी का एक इतना अहम जुज हो सकता है। सेरोटोनिन और डोपामाइन और ये तमाम तर चीजें जो आपने बताई, इस साइंटिफिकली तौर पे इट वाज वेरी मच वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन एंड सुन्नत भी है ये। और माशाल्लाह से येलो कलर की अहमियत, अफादियत भी आपने बताई माशाल्लाह से। मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सब लोगों से, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मरियम फैसल जो हैं वो ना सिर्फ फाउंडर हैं बल्कि जो है वो सर्टिफाइड वेलबींग कोच भी हैं और स्किन कंसल्टेंट भी हैं और मेंटोर भी हैं, मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, FPCCI में वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की मेंबर भी हैं और फैशन डिजाइनिंग। इस सिलसिले में अगर कोई भी आपको कोचिंग चाहिए हो, काम हो, वर्क चाहिए हो, कंसल्टेंसी चाहिए हो, इनकी सर्विसेज चाहिए हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल में नीचे जो है वो जो टेक्स्ट बॉक्स है वहां पे तमाम तरह इसकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा इनका कॉन्टैक्ट डिटेल। यू कैन कॉन्टैक्ट विद हर। स्लाइड्स आपको ईमेल कर दी जाएंगी। और YouTube चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत जरूरी है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप शेयर करें और लाइक करें, ताकि आप लोग आगे शेयर कर सकें। और आई एम ग्रेटफुल, जज़ाकल्लाह जी अब्दुल बासित साहब, आपने मुझे ये मेरे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मुझे लोगों ने बुलाया और मैंने सिर्फ इसी पे बात की है। एक जगह मुझे बुलाया था, उन्होंने कहा था साइबर सिक्योरिटी का कुछ इशू, कुछ बात थी, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मेरा काम तो मुस्कुरा के बिखेरना है, आप साइबर सिक्योरिटी की बात कीजिएगा, मैं बात करूंगी कि जो मुस्कुराना कितना जरूरी है। मैं जो इसी पे बात करती हूँ, बिकॉज आई फील दैट माशाल्लाह दिस इज समथिंग we have forgotten to smile। और गैजेट फास्टिंग की भी मैंने बात करी थी, लेकिन वो हमारी हुई नहीं, लेकिन इंशाल्लाह हम इस पे दोबारा और बात करेंगे। there are so many topics to discuss that, but gadget fasting is very important because जितना ज्यादा आप मोबाइल और लैपटॉप के आगे रहते हैं, आपकी जो मेमोरी सेल्स हैं वो डैमेज करता है। तो अगर आपने देखा होगा कि आजकल बच्चे और बड़े सब ये कहते हैं कि याद ही नहीं रहता कुछ, तो वो सबसे पहले मेमोरी डैमेज करता है, मेमोरी सेल्स को। तो हम मुस्कुराएंगे तो मेमोरी हमारी मल्टीपल होगी, और जब हम फोन को एक साइड पे रख देंगे, आज मैंने शुरू में बोलना भूल गई, मैंने बोलने वाली थी कि सब अपने मोबाइल को जो है वो बॉक्स में बंद करके रख दें। 1 घंटे के लिए आप मोबाइल गैजेट फास्टिंग पे चले जाएं, तो दिन का एक हिस्सा जरूर बनाएं जिस वक्त आप अपने फोन को लपेट के बंद करके रख दें। अनलेस और अनटिल कोई इमरजेंसी है, वो तो अलग बात है, ये ना कहें कि मुझे इमरजेंसी था हम नहीं कर सकते, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो ये जिंदगी में जरूर प्रैक्टिस करें कि कम से कम गैजेट का इस्तेमाल करें, बिकॉज इट्स ruining our brain cells and the memory cell, which is not good। तो और बच्चों को तो बिल्कुल ना दें, अगर बहुत जरूरी है तो 15 से आधा घंटा, इससे ज्यादा मैं बिल्कुल आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपनी जिंदगी में निपटाएंगे तो it will benefit you definitely। ग्रेट हो गया, जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल। हैदर साहब, आपकी रिक्वेस्ट मुझे मिल गई है और पेरेंटिंग के ऊपर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वर्चुअल मीट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। मिस मरियम, अगेन थैंक यू सो मच, यू आर लुकिंग ऑसम, वाइब्रेटिंग पर्सनालिटी आपकी, और इस टाइम
आपने पूरा शो जो है माशाल्लाह बेहतरीन जो है ना डिलीवर किया है। एंड अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। और अल्लाह से दुआ ये है कि जो भी आगे हमने शेयर सीखा करें है, और दुआओं में याद रखें, दुआओं में याद रखें, जो भी शेयर किया उसकी शर से महफूज करे और इसमें आफियत के मामला हम सबके लिए पैदा कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।